लोग बीफी लोग की तरफ जाते हैं, ये सबसे गलत बात है. बीफी होना is an additional benefit, but that doesn't make you a trainer. Are you educated to be a trainer? Are you well qualified to be a trainer? अब आप रिहैब करने आ रहे हो तो आप किसी पावर ट्रेनर के पास नहीं जाओगे, स्ट्रेंथ ट्रेनर के पास नहीं जाओगे. Right. आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो आप CSCS के पास जाओगे, बिकॉज ही हैज डन हिज स्टडीज स्पेसिफिकली इन दैट. आप एक जेनरिक ट्रेनिंग के पास आ रहे हो तो आप K11, ACE, ACSM, ईसा के पास जा रहे हो. आप न्यूट्रिशन बेसिस पे आ रहे हो तो आप कोच बता रहे, इज ही सर्टिफाइड? Just because he has a body does not mean that he's certified. Is he a sports nutritionist to educate you? Yeah, experience है. फिर वो हो गया ना, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा नहीं है, कंपाउंडर है, वो डॉक्टर बन गया और बोल रहा आप उससे मैं दवाई ले लेता हूँ. Correct. वैसे ही होता है. आप किसी भी लेवल पे ले लो, and people are aware about it. मैं बोलूँगा नहीं, जो अगर वो लोग सुन रहे होंगे सबको पता है, समझ में आएगा. समझ आएगा. आज कुछ प्रो कोचेज हैं और कुछ प्रो कोचेज भी हैं जिनको मैंने गाइड करा है, जो मेरे साथ रहे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. बट नोबडी पेड. मेरा कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, बट आज के टाइम में मैं सबको यही बोलूँगा, जो आप फ्री का करते हो, आप मेरे पास आओगे, सर मैं ये क्या ले लूँ, मैं तो नहीं. आप किसी रैंडम के पास जाओगे, हाँ तू ये डाल ले, मैंने करा है. बट आपको आप उस कोच के साथ क्यों नहीं हो जो पढ़ा लिखा है? कितने अच्छे कोचेज हैं इंडिया में. India has got good coaches. Very good. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे कोच नहीं है. India's got very good coaches. And I think so. Coaches are really upgrading themselves. जिम करोगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करोगे, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा, आपकी हार्ट की लाइफ बेटर होगी. Absolutely. एक रेस्टिंग हार्ट रेट नाम की चीज़ होती है. प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं वो रिसर्च कर सकता है. और जब आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हो और आप कंडीशन करते हो अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू आर ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग ऑन योर हार्ट कंडीशन, राइट? सो जितना आप हार्ट को कंडीशन बेटर आप उस पर काम करते रहोगे अपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी पे, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा. जितना रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो रहा है उतना मतलब है कम बीट, मतलब दिल उतनी बार कम धड़कता है और उतने कम टाइम में आपको उतना ही एफिशिएंट आउटपुट दे. Hello everybody, welcome to another podcast of the Andropique mic testing with me, Gavin Phillips. Now today I have a very interesting guest. Yes, you've seen him as an amazing athlete on stage. And let me tell you one thing, he's started off his journey in the field of bodybuilding at a very, very early age. You've seen him, you know him very well. So it's time for all of you to meet my guest at this point of time. We have Mr. Updesh Saluja. Warm welcome, sir, to the podcast of Andropique mic testing. Thank you, Gavin. Thank you so much. I am glad I made it. And I'm really looking forward to pass on something good, what I've learned in the while, to the people out there. So let's hope for best. Thank you, and thank you very much. You know, you've made it a point to come down to my studio here in Pune, come all the way from Mumbai. So it means a lot to me and my entire team. So thank you so very much. Thank you so much. When I gave your introduction, I spoke about you starting your bodybuilding career at a very early age. You started off at the age of 13. 13, yeah. What made you start off so early? I mean, at the age of 13, if I remember, I was struggling to study at that point of time. Yeah. My algebra and geometry, I was not getting hold of that. But how come you got hold of dumbbells at that point of time? So I was in Lucknow and we were shifting from Lucknow to Assam. So there was a gap of 3 months. So I knew my year is going to skip up. So I joined the gym then. And going to the gym once, that was the best toy I could have, you know. I was so happy lifting the weight. I was really amazed when I entered the gym because everybody was fit and working hard, sweating like a pig. And I just got my eyes on the right people and I got inspired, you know. And later on, when I shifted to Assam, that was the time when I actually started working out with the right focus, with the right coaches. At that time, and I believe it was 2001 when I started with Muneen Barwa, you know, who guided me up, and I stepped on the stage in 2002 in All Assam Engineering College, where I got a silver medal at 50 to 55 kilos. And then I played Mr. Kamrup in 2003, where I got a bronze medal. So that is how the journey started. And it's still going on. And it's still going on. I never stopped working out. It's been 24 years. I stopped competing though because of my education. I was trying to,
focus. I was a bit focused about my education that time because I really wanted to grow, more in life. Right. But I can say you that in totality of 24 years, if I count my if and buts and travel and injuries or a fever, it must be a gap of 1 year. And 1 I've year. trained all the while. So, okay, what if you get up in day, one day in the morning and if you look, I don't want to work out today? Because for you apparently there is no cheat day, there is no off season, right? Yeah. So if you get up one day and you say, I'm not in the mood to go to the gym, I just want to sit, relax, Netflix, does that ever happen to you? It's been 24 years. If you ask me genuinely, if I love going to the gym so much, because from the early days when people were playing with the toys, I always saw a toy in a gym and I always enjoyed sweating out. So even if I'm stressed or let's say I'm too happy or I'm too low, that will be my first spot that I would love to go. And once you're in the gym, you can't stop. Like you have to. And if it is unless if it is in my routine now, I take. So when I do my lean gains, I do 5 days workout, and I take rest for 2 days, either Thursdays and Sundays, or I train from Monday to Friday and I take rest on Saturdays and Sundays, which is a part of my training. Otherwise, there is no excuse. Yeah. Wow. So, you're a motivation for a lot of people, not just to go to the gym, Yeah. but to be consistent. Yeah, So, thank when you. everyone wants to work, everybody, when they go to the gym, first thing they have in mind, whether from going to a gym, Yeah. either want to lose weight, want to Yeah. gain muscle, or just be fit. Yeah. But the bottom line is, no matter if you achieve your target or Yeah. not, you have to be consistent even after you achieve your target. Absolutely. So it becomes like you need to make this as your lifestyle if you want to be this way. Yeah. So a lot of people apparently don't continue it after they reach their target. See, a lot of people are playing bodybuilding with an aim to just win a pro card or just to win a medal or just to make a body to impress somebody or just to make a body to prove something to somebody. But when you are into bodybuilding is a way to live. You're living your life. Right. It's been 24 years. I've been eating back to back, training back to back. And it has never been boring that, oh, I'm getting bored or I don't feel like doing that. Or because it was a part of me. So I step on the stage to enjoy, not to prove. You know, I will be happy if tomorrow I get a pro card. As I say, it is a subjective game. On that day, if I'm looking good or not, that's important. Right. And I'm glad those who are winning, they are coming with a good package on that very day. But that does not prove anything that I'm not good enough because those who know me from so many years, have always seen me in shape throughout. There is no off season. no I'm off-season. always maintained, Right. because it's a way of life. So it is not like, oh, today I want to eat chola bhatura or I want to eat samosa or like that. Even my cheat meals are chicken breast, broccoli, mashed potato. Maximum I'll take a soda just for a taste. Any carbonated drink just for a taste once in a week. That's all. That is how I go about it. You just spoke about people coming in for short-term things, whether to impress someone or just have to look good for an upcoming event. Now you're a coach as well. Yeah. When a client comes up to you, do you have people coming with this kind of request? You know what? I'm getting married in 2 months. I need to get in shape just for my wedding. Absolutely, I do get. Yeah, I do get. So I am into transformations from last 9 years now. Before that, I was into fitness and a lifestyle, in a functional movement space. But since I've been competing, I've been with one of the best coaches in the world, and I've studied a lot, and I've upgraded my knowledge. And now, because I'm into transformations, or in other language, you can say a prep coach. People come and think 2 महीने में बॉडी बनानी है सर, शादी है. आप साल भर लगाते हो अपनी बॉडी को खराब करने में. आपकी लाइफस्टाइल खराब है. आप शराब नहीं छोड़ सकते, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो. आप 2 महीने में बॉडी बनाना चाहते हो. आपकी बॉडी इज यूज्ड टू समथिंग, योर लाइफस्टाइल. नाउ व्हेन यू चेंजिंग द लाइफस्टाइल, नाउ पहले दिन तो कोच आपको 10 किलोमीटर नहीं चलवाएगा, ये नहीं करेगा. और अगर कोई आपको कोच बोलता है कि हाँ सर मैं 2 महीने में करवा दूंगा, ही इज नॉट द राइट कोच फॉर यू. सो आई एक्चुअली डोंट टेक 2 months. आई रिफ्यूज टू टेक ट्रेनिंग जो आते हैं 2 महीने के लिए. चलो, sorry to interrupt.
अभी आपने कहा कि लोग की बुरी आदतें हैं, Yeah. तो छोड़ने में टाइम लगता है, Yeah. बॉडी को आदत होने में वक्त लगता Yeah. है, Of सही है? course. Yes. तो हम आम आदमी को छोड़ते साइड है। Yeah. लेट्स गेट इनटू द मोर सीरियस नोट, पीपल हैव टू लूज वेट। Yeah. अगर मुझे एक मूवी या एक सीरियल या एक I have OTT lot में, of clients तो like आपके that बहुत who सारे come. क्लाइंट्स आए होंगे, Yeah. उनको उनको फॉर्मेट है कि उनको ट्रांसफॉर्म 3 महीने में करना है। Yeah. लाइक फॉर एग्जांपल, जब हमने आमिर खान की मूवी देखी गजनी, Yeah. स्टार्टिंग में अलग दिख रहे थे टू व्हेन ही एंडेड Yeah. अप कमिंग लुकिंग ऑल बफ्ड। Yeah. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप वो भी करते हैं, राइट? Of course I तो do all वो that. पॉसिबिलिटी है 6 महीने में, इफ यू कंपेयर इट टू अ नॉर्मल मैन। अभी मुझे अगर पता है कि 6 महीने में ऐसी बॉडी अगर बनती है, फ्रॉम बीइंग लीन टू बीइंग ह्यूज बफ्ड अप मस्कुलर, Yeah. So honestly ये झूठ होता है, you know, like आप जो भी बोल लो कि इसने नेचुरली ट्रांसफॉर्म करा, उसने नेचुरली 3 महीने में करा, आप एक ट्रांजिशन अब करते हो, आप मसल अब आपको नहीं पता कि आमिर खान 70 किलो से मस्कुलर लग रहा है क्योंकि स्क्रीन पे वो बहुत बड़ा लगता है। सो आप लीन बॉडी पे फिर भी आप फैट कम करके विजिबिलिटी बढ़ती है मसल की, बट if you are taking an example of Amir Khan, that is not natural. It is an enhanced body. That is why the muscle visibility was like that, the muscle maturity was like that. और कोई भी आता है जो बॉडी बनाने आता है, स्पेशली जो मसल मास के लिए आता है, इट टेक्स यू टाइम, इट टेक्स यू टाइम। आप 100 किलो पे आ रहे हो पर आपका फैट अगर 40% है, डजंट मेक सेंस। डजंट मेक सेंस। आप 60 किलो के हो पर आपका फैट 12% है, मैं फिर भी आपको हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा लीन मास बढ़ाने में, विच विल गिव यू नाइस विजिबिलिटी। बट अगर आपको साइज चाहिए, यू नीड टू हैव एन ऑफ सीजन। आप 6 महीना 8 महीना जो भी मेरे स्टूडेंट से उनका कस्टमाइज प्लान होता है, या कोई भी प्रेप कोच अपने स्टूडेंट के हिसाब से, ओके 6 मंथ लेट्स डू एन ऑफ सीजन, आप गेनिंग करो, आप 15 किलो बढ़ाने या 20 किलो का टारगेट है या 10 किलो का टारगेट है, आप लीन गेनिंग करते हो कोच के साथ, तो वो बोलेगा ठीक है 7 किलो का टारगेट है या 8 किलो का टारगेट है। सो डिपेंड्स करता है और टाइम लगता है। ये सब झूठ है, ये जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, जो बोलते हैं मैं नैटी हूँ और दिखाते हो चिजल्ड होके आ जाते हो ऑल ऑफ अ सडन, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट, इट्स ऑल लाई। ये आप इन्फ्लुएंसर्स की बातों में मत आओ। मुझे 24 साल हो गए, मैंने 14 साल नेचुरली करा है। 2014 सितंबर में जब मैंने फिट फैक्टर की तैयारी करी थी, पहली एनाबॉलिक साइकिल ली थी, एंड आई एम ओपन अबाउट इट। आई डिड इट। तब मुझे वो 14 साल में मुझे समझ आया और मैं कंसिस्टेंट था। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, मेरा वही हफ्ते तो का आपका अभी भी egress कंसिस्टेंसी चालू है? अभी भी है। तो जैसे आपने कहा कि थ्रू आउट द ईयर अगर आप मुझे देखोगे, Yeah. आप ऐसे ही रिप्ड रहते हो। या मैं So, ऐसे ही रहता आपका हूँ। ऑफ सीजन रहता नहीं है। सो आर यू ऑफ रॉइड्स एज वेल? सी, ऑफ रॉइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अ प्रोफेशनल, डिपेंडिंग हाउ योर ब्लड वर्क इज एक्टिंग। आप पोस्ट साइकिल और प्री साइकिल में आप अपना देख रहे हो ब्लड वर्क कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपका ब्लड वर्क सही है एंड यू आर इनटू द मिडिल रेंज, आप ना लोअर एंड में हो ना आप हायर एंड में हो, आपके ब्लड वर्क मेंटेन्ड है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द साइकिल्स। बट आप जब ओवरडू करते हो, आपके कोचेस ने आपको ये भी ऐसे डालो, ये भी रोज डालो, वो भी रोज डालो, और आपकी ब्लड वर्क खराब होता है, आप नहीं ऑफ जाओगे, आप यू विल बी वैनिश्ड। आप कंपटीशन में 1 साल दिखोगे, 2 साल उसके बाद नहीं दिखोगे। आप मुझे कितने लोग दिखते हैं आपको 2015 से, मैं 2015 से खेल रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी मेंस फिजिक खेला था, एंड पीपल नो दैट आई प्ले कंटिन्यूअसली एवरी ईयर 2 कॉम्पिटिशंस। तो ये साल आप कंप्लीट आपने किया है? इस साल मेरे को करना था, अभी 2024 की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अब क्योंकि आप 2023 में आपने कंप्लीट किया था, आई थिंक किया मुंबई था। में, राइट? या नवंबर में, एंड आई वाज प्लेइंग मेंस फिजिक डिवीजन राइट। and I competed. That was a 10-week transformation. And इस साल मुझे करना था, but I got a typhoid recently and I lost around all my gains. I lost around 12 kilos. No, that's a lot. Yeah, so this time I want to give a good break. I'm resting. ऐसा नहीं होना चाहिए कि no, मुझे खेलना ही खेलना है, खेलना ही खेलना है। अब मैं एंटीबायोटिक्स पे था। Yeah. आप समझिए मेरी बॉडी में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और मैं एनाबॉलिक भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम नॉट डूइंग You're जस्टिफिकेशन। not be harming your body at the end of the day. या सो आप रियल रहो, आप वो मत करो हाँ बेटा तू कर लेगा, तू मेडल ला लेगा, करते ना करते। प्लीज बी अवेयर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी हेल्थ कितना आपको अलाउ कर रही है। अगर आपकी हेल्थ आज मेरी हेल्थ डिटोरेट हुई, मुझे टाइफाइड फॉर वट एवर रीजन हुआ, जो भी इन्फेक्शन हुआ,
Now I'm going to give a good rest of 3 to 4 months for my body to heal from inside. Absolutely. And then only I will start my peds again and I'll prepare for next year. Correct. But next year for sure, 2025, I have to be back and I'm already 38 running. So at 39, the recovery is slow, and with the age, the injuries pattern, the recovery pattern, everything You have to be extra changes. careful as you were around 10, 12 years back. Absolutely. आप body की physiology पूरी change होती है, then you have to be very, very careful. Right. और मैं सिर्फ इस पॉडकास्ट के थ्रू ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, प्लीज डोंट कैरिड अवे इफ यू आर विद योर गुड कोचेस. अगर आपके कोच अच्छे हैं, वो जहाँ पे आपको रेस्ट लेना है वो आपको बताएंगे और आप उनकी बात सुनो. It is very important for you to be honest towards your coach. If your coach is saying कि अब रुक जाओ, अभी तुम्हारा blood work खराब है, तो you are supposed to take a good rest. You are not supposed to push in कि मैं TRT कर लूँ, मैं वो कर लूँ, depending upon your coach, what he recommends you. Right. Now आप एथलीट के अलावा आप कोचिंग भी करते हो, right? Absolutely. So जब आपने शुरुआत किया था, आप you were a celebrity coach, you trained a lot of celebrities. I have. So my question is, how was it a difficult thing for you to get celebrities to train? Because having a celebrity as a client is not that easy. See, celebrities won't come to you directly. You have to be known for your education, and it is the right time. When I came from Delhi, I shifted to Bombay in 2015. I trained Sonu Nigam ji. Right. First one, and luckily, he liked my work, and my journey started very well. And फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन करा ऐसे जिनको पता था कि ही इज नॉलेजेबल एंड हिज वर्क इज गुड, हिज रिजल्ट्स आर गुड. सो इफ यू क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. आप आज एक कोर्स करते हो और आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट बन जाते हो, या आप आज एक बार अपनी बॉडी बनाते हो और आप सोचते हो कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट बन गया हूँ, ऐसा नहीं होगा. बट ये मेरे ख्याल से एक मेंटालिटी है लोगों में कि अगर मेरी बॉडी बन जाती है, I know everything. वो है, ये normal है. Right? ये normal है. Apparently, for example, if I come to a gym and I tell the management कि मुझे एक personal trainer चाहिए. Yeah. They will show me a rate card. This is what. And if you have a look at the trainer, maybe you look at a trainer who's not ripped. Yeah. But who still has knowledge. You will still go to the guy who's beefed up. Yeah. But who may have little knowledge, but because he's got an amazing physique, you think he will get you at the same level that he is. It's a very good point. Now the tricky part क्या होता है इसमें, पहले तो आप जिम क्यों जा रहे हो? जिम इज जस्ट नॉट अबाउट बिल्डिंग बॉडी. आप पहले ये डिसाइड करो, आर यू गोइंग फॉर फिटनेस और फॉर मेकिंग एस्थेटिक. फिटनेस एंड एस्थेटिक आर टू डिफरेंट वर्ड्स. Absolutely. सो इफ यू आर गोइंग फॉर लेट्स से आप एक जिम में आए, आपका काम है पहले पूछना कि अगर आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि देखो मैं फिटनेस के लिए आया हूँ. अब आपको फिटनेस में क्या है? आप स्ट्रेंथ के लिए आए हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी गोल्स के लिए आए हो, आप बैलेंसिंग गोल्स के लिए आए हो, आप कोर गोल्स के लिए आए हो, आप कार्डियोवैस्कुलर गोल्स के लिए आए हो, आप एजिलिटी गोल के लिए आए हो, आप स्पीड गोल के लिए आए हो, या आप रिएक्टिविटी गोल के लिए आए हो, या आप VT1 VT2, या आप जोन 1 जोन 2. व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस आर यू लुकिंग फॉर? कितने लोगों को पता है? अब आप मेरे पास आओगे, बोलोगे आप मुझे पतला होना है. एग्जैक्टली नॉर्मल आदमी क्यों बोलेगा ना मुझे पतला होना है? पहली चीज़ है अवेयरनेस होनी चाहिए. ये जिम्स वालों की भी गलती है कि, और जो ट्रेनर्स है उनकी भी गलती है कि वो गोल क्लियर नहीं करते. सब लगे कंपाउंड मूवमेंट कराने में. विद ऑल रिस्पेक्ट, आप एक जगह से पढ़े हो तो आप सारी कंपाउंड मूवमेंट करा रहे हो, आप दूसरी जगह से कर रहे हो तो आप फंक्शनल बेस्ड ट्रेनिंग करा रहे हो. बट आर यू क्लियर अबाउट व्हाट द क्लाइंट नीड्स? डू यू डिस्कस विद देम? आप उनकी लाइफस्टाइल पूछते हो कि क्या लाइफस्टाइल है? उनको पतला होना है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर फिटनेस. Correct. So obviously you need to know what the client needs, what he wants. और दूसरी चीज, सॉरी, जैसे आपने कहा कि लोग बीफी लोग की तरफ जाते हैं, ये सबसे गलत बात है. बीफी होना इज एन एडिशनल बेनिफिट, बट दैट डजंट मेक यू अ ट्रेनर. आर यू एजुकेटेड टू बी अ ट्रेनर? आर यू वेल क्वालिफाइड टू बी अ ट्रेनर? अब आप रिहैब करने आ रहे हो तो आप किसी पावर ट्रेनर के पास नहीं जाओगे, स्ट्रेंथ ट्रेनर के पास नहीं जाओगे. Right. आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो आप CSCS के पास जाओगे, बिकॉज ही हैज डन हिज स्टडीज स्पेसिफिकली इन दैट. आप एक जेनेरिक ट्रेनिंग के पास आ रहे हो तो आप K11, ACE, ACSM, ईसा के पास जा रहे हो.
आप न्यूट्रिशन बेसिस पे आ रहे हो तो आप कोच बता रहे इज ही सर्टिफाइड just because he has a body does not mean that he's certified. Is he a sports nutritionist to educate you? या एक्सपीरियंस है फिर वही हो गया ना, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा नहीं है, कंपाउंडर है, वो डॉक्टर बन गया और बोल रहा है आप उससे मैं दवाई ले लेता हूँ। करेक्ट, वैसे ही होता है। हाँ, तो आप क्लियर रखो। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी करी। आई वॉज नोन फॉर माई रिजल्ट, फॉर माई फिटनेस। मैं अब जाके मैं 18, it's been 18 or 18 and a half years I've been training people. I've trained more than 1700 people. I have transformed more than 102 people. I used to take group classes. तो मैंने जब करियर शुरू करा था, मैं बेसिक लेवल से शुरू करा था। 2 साल, 4 साल, 5 साल बेसिक्स सीखे, फ्रॉम अ फ्लोर ट्रेनर टू बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इज्जत नहीं मिलती। फिर पढ़ाई समझ आई तो कोर्स क्लियर करा। कोर्स क्लियर करने के बाद तो मुझे चीज़ें समझ आती थी, एनाटमी पता थी, ये कौन सी मसल है, क्या मसल है, इस अगर घुटने में दर्द है क्या चीज़ करनी है नहीं करनी, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब समझ होनी चाहिए। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद भी मुझे फॉर एटलीस्ट 6, 7, 8 years मैं नॉर्मल कराता गया, फंक्शनल ट्रेनिंग सीखता गया, प्रोग्रेस होती रही, सीखता गया, प्रोग्रेस होती रही, और अब जाके मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट बना 18 साल के बाद। It's taken a long time to come to that journey. You don't, आज मैं एक कंपटीशन खेल के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट नहीं बनता। आप हर कोई देख रहे हो, with all respect, if somebody is winning a medal, they're becoming a transformation coach for what is your experience? Okay, you are 19, your body is amazing and आपको सब चीज़ें सूट करी, आपका उस दिन अच्छा था and you won a medal and now you've become very popular, but are you a coach to educate everybody else? Apart from your body, do you know anything else? नहीं, you know his body apparently. Yeah, so this is an ugly truth, but people are not ready to understand. लोग समझना नहीं चाहते, उसने मेडल जीत गया तो मैं उससे ट्रेनिंग करूंगा, उसने मेडल जीत गया तो मैं उससे ट्रेनिंग करूंगा, ऐसे नहीं होता। I'll just share one thing with you. Yeah. A lot of people do not know. So similar incident that happened to me apparently. Okay. So it was 2005. I finished off my standard 12. Yeah. And I didn't know what to do. I was getting bored. So we was walking in the University of Pune campus and I saw a gym. I said जाके देखते हैं क्या सीन है. So I went and said मुझे जॉब चाहिए. क्या जॉब चाहिए आपको? ट्रेनर का. So the gym manager he said okay बैठ जाओ. एक काम करो. You have a spondylitis client who's got spondylitis problem. वो हिसाब से वर्कआउट आप लिख के देता मुझे. Am I qualified? No, I just finished my 12th. I don't know what to do. Yeah. I said ठीक है. I used to go to the gym previously. What workout I used to be given by my trainer, मैंने वो ही बनाया. And I gave it to him. ठीक है, Monday से आना. 1500 रुपए सैलरी. I said wow, is that easy? Yeah. So for me 1500 was a big time. Big time. So what I'm trying to say is people didn't care about who, what, why, about education. You know few exercises you're capable of standing there. Now since education means a lot, we should be very careful about where we're putting our money on. Yeah. To coaches, to trainers who are qualified because they're going to be playing with your body. Yeah, absolutely. With all respect, like a lot of, I have helped 100 of people. आप किसी भी लेवल पे ले लो, and people are aware about it. मैं बोलूँगा नहीं, जो अगर वो लोग सुन रहे होंगे सबको पता है, समझ में आएगा, समझ आएगा। आज कुछ प्रो कोचेज हैं और कुछ प्रो कोचेज भी हैं जिनको मैंने गाइड करा है, जो मेरे साथ रहे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। बट nobody paid. मेरा कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, बट आज के टाइम में मैं सबको यही बोलूँगा, जो आप फ्री का करते हो, आप मेरे पास आओगे, सर मैं ये क्या ले लूँ, मैं तो नहीं हूँ, आप किसी रैंडम के पास जाओगे, हाँ तू ये डाल दे, मैंने करा है, बट आपको आप उस कोच के साथ क्यों नहीं हो जो पढ़ा लिखा है? कितने अच्छे कोचेस हैं इंडिया में। इंडिया हैज गॉट गुड कोचेस, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे कोच नहीं, वेरी गुड कोचेस, एंड आई थिंक सो कोचेस आर रियली अपग्रेडिंग देमसेल्फ। मैं ऐसा किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं लूँगा, बट बहुत अच्छे कोचेस हैं, क्योंकि मेरा बोलने से ऐसा ना हो किसी और को लगे कि मैं कम हूँ। अब मैं खुद प्रेप कोचिंग में हूँ और मैं आज भी
एज एन एथलीट मुझे भी लगता है कि मुझे भी किसी से भी और सीखना है व्हेन इट कम्स टू माय इंडिविजुअल एज एन एथलीट. But I have got around right now around 9 athletes, plus around 6 one-to-one, and couple of few lifestyle students. Because I work very differently and I work very small. I don't like to work with a lot of people. Please go to a coach who is well educated. Spend money on a coach who knows the blood work, who knows आपको कब रुकना है, who can inspire you positively and can show you a vision and be there as a mentor. Right. See, a coach is just not, मैं आपको फिर से ये चीज़ है, कोच वो नहीं होता जो आपके साथ रोज फोन में बात कर ले, कैसा है तू, गेविन तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तेरा वर्कआउट कैसा है, ये नहीं है. That's not a coach. Coach is somebody who is a combination of everything. He should be thoroughly educated. Plus, he should be experienced in the same background, right? Practically and theoretically. As I say, practice what you preach what you practice. Right. This is what I say every time to people, A coach should be a good mentor and a coach should know a little human behavior कि किस इंसान को किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है. Right. That is a combination of a good coach. अगर आपको लग रहा है कोई आपका कोच बस आपको प्रोग्राम हाँ बेटा ठीक कर रहा है, check-ins भेज दे, ये करे, that is not. Okay, so when I was going through your profile, मैंने देखा कि you're the highest paid trainer in the country, if I'm not mistaken, right? So yes, yes I am, because I've given 18 years. I like to keep low profile. I don't talk much about it. Okay. But I work with very limited clients and I get paid nicely. Yeah. No, but so it is an honor for me apparently. Yeah. On the Andropique mic testing comes to interact with the person, with the trainer who's taken his life serious, who's living his principles, and is one of the top trainers or the top highest paid trainers. Because any job you do, you need to be paid for it. Absolutely. And being appreciated and being called the highest paid trainer in the country, I'm sure it definitely means a lot. It does, but I've given 18 years now. And I'm sure if I can do it, anybody out there can do it. Please keep upgrading yourself. Making body is a very small part of being a good coach. Right. Making a body doesn't take you anywhere. Today it is there, tomorrow it is. But your education will keep your work high. The results will be good to the clients. And when your name is, let's assume you start with today 20,000. For 12 sessions or 16 sessions. For 1 year, when you have a lot of clients, gradually you're increasing and you're giving result and the renewals are happening, please make a hike of 10 to 12% in your prices, And then again, with those prices, work hard, give result, look for the renewals. And I'm sure then somebody's budget is 15, somebody's is 20, 25, 30. We have all kind of people, right? So if you are upgrading yourself theoretically and practically and you're giving good result and you are well behaved and well groomed up, why won't you be paid well? Why won't you be paid well? I think ज़्यादा करके जितने भी ट्रेनर्स हैं सारे हेजिटेट करते हैं कि अगर मैं XYZ अमाउंट 10% 12% जो आप इंक्रीज करने बोल रहे हैं अगर इंक्रीज करते हैं तो उतना क्लाइंट्स रिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेनर्स आर इनसिक्योर, दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर नॉलेज. If you upgrade your knowledge, if you upgrade your skills, how does it make a difference? वो जाएगा दूसरा बंदा आएगा. Because people know you have that kind of a skill. So be so good in your skill that people should only look up to you. Right. आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, बॉडी बिल्डर, पर जिमनास्ट के लिए कोई मेरे पास नहीं आएगा ना. वो जाएगा उसी के पास जिसके पास स्किल है. Absolutely. अब मानो वहाँ पे 10 जिमनास्टिक ट्रेनर है, एक 1,000 रुपये पर घंटा चार्ज करते हैं, एक 10,000 रुपये. पर जो 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो उसकी एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्लाइंटल का रिजल्ट कैसा, उसके बहुत मैटर करता है. राइट. सो इट्स नेवर टू लेट. अब ऐसा नहीं होता कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप पहले दिन में करोड़पति बन जाओगे. यू विल स्टार्ट विद स्लो, नाइस एंड स्लो, धीरे धीरे करके आप बढ़ते हो. आप जॉब, कोई कॉर्पोरेट जॉब भी करते हो, आपको 4 लाख का पैकेज मिला, फिर आपको धीरे धीरे अपग्रेड होगा, आप 4.5 पे जाओगे, 5 पे जाओगे, फिर आप एक टाइम आएगा जब आप 10 या 15 लाख के भी पैकेज पे होगे. तो इट इज सेम. राइट.
It is same, you know, just keep going and trust me, training is one of the best profession. You know, you don't realize as a trainer that you are doing so good to the people out there and people don't value that. You are curing them, you are making them healthier. They don't understand कि अगर तुम फिट नहीं होगे तो तुम वो पैसा भी नहीं enjoy कर पाओगे. आज ट्रेनर की वजह से तुम फिट हो, ट्रेनर की वजह से तुम उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, दिक्कत नहीं है. ट्रेनर की वजह से तुम अगर एक लेट्स एक जिमनास्ट हो, एक अच्छा ट्रेनर है, उसी की वजह से तुम बेटर हो रहे हो, राइट? एक बॉक्सर है, उसके ट्रेनर की वजह से तुम एक अच्छे बॉक्सर बन पा रहे हो. वैसे ही जब आप लाइफस्टाइल होती है, आप घुटनों में दर्द होती है, आप बैठ नहीं पाते हो, पर एक अच्छा ट्रेनर जिसके पास एजुकेशन है, वो आपके जब आपके लेग स्ट्रॉन्ग करवाएगा, यू विल बी एबल टू sit and stand up without a pain. You can travel the world, enjoy that money. Health, आपको पता नहीं है कितना बड़ा वेल्थ है. हेल्थ इज अ वेल्थ. नो, एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. अभी एक फैक्ट है, रियलिटी है कि अगर मैं जिम जाऊंगा और ट्रेनर अगर फॉर एग्जांपल महीने के 15 या 17 हज़ार मांगते, तो हम सोच में डूबते कि यार 17 हज़ार 15 हज़ार देना सही बात होगा कि नहीं. लेकिन अगर कुछ बीमारी हो जाता और हॉस्पिटल में जाना पड़ता, और वो लोग हाथ में बिल थमा देंगे 25-30 हज़ार 1 लाख का, आपके पास ऑप्शन रहता है? नहीं, देना नहीं पड़ता रहता, देते हैं लोग. सो वो पैसे देने में आपको दिक्कत नहीं है. जबकि ये चीज़ आपकी लाइफ से आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा, आप इस चीज़ के लिए खर्च करते ही नहीं है. ये एक माइंड सेटअप है ना. आप मुझे बताओ, जब आप क्लास 11-12 पे होते हो, आपको बायोलॉजी पढ़नी है, you go ahead for the best teacher, right? Absolutely. Why do you choose a best teacher? So that you can get the good grades, Excel right? And you can excel. आप उस चीज पे अच्छे से पास कर पाओ, एक्सेल हो, आपको नॉलेज हो कि आप वो आगे कंटिन्यू कर पाओ. Absolutely. आज आपको सीए अकाउंटेंट अपने टैक्स फाइल करना होता है, आप सीए को पैसे देते हो ना, राइट. आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर को देते हो, सही राइट? है. आप बाल कटवाते हो, आप बार्बर को देते हो, राइट? आपको कपड़े थोड़े डिज़ाइन कराने होते हो तो आप डिज़ाइनर के पास जाते हो. तो हेल्थ को लेके क्यों हेजिटेट हो आप क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पर नाइट आई हैव सीन देम फ्रॉम माई ओन आईज, जो लाख रुपए ऐसे उड़ा देते पार्टीज में. बट मैंने उन्हीं लोगों को देखा है, वो मेरे सामने ट्रेनर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, यार 20,000 बहुत ज़्यादा है, 15,000 लगाओ, या 50,000 नहीं 40,000 लगाओ, नहीं 12 सेशन नहीं 16 सेशन दो. आप डॉक्टर के पास जाके नेगोशिएशन करते हो, नहीं एंटीबायोटिक दोगे तो मैं इतना पैसा दूंगा, किडनी का करोगे तो वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जितने हमारे ट्रेनर्स, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फिटनेस स्कूल्स, हमारे ट्रेनर्स क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, दे विल मेक योर लाइफ्स बेटर, दे विल मेक यू फिजिकली फिट एंड एक्टिव. Of course. But because of the amount that you don't want to hesitate to pay, it is actually an investment. It is not a money that you're throwing in. Of course. आप बीमार हो गए, आप आज भगवान न करे आज के टाइम में हार्ट अटैक के आप केसेस देखें, आपका एक स्टैंस डलता है या आपकी सर्जरी होती है या आर्टरीज क्लियर होती है, तो कितने का खर्चा है? 18 से 20 से 25 लाख का खर्चा है. आपकी इंश्योरेंस होगी 5 लाख की, 10 लाख की, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में, उससे ज़्यादा की तो अपनी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में हो आप. बट अगर आप वो प्रीमियम भरने से अच्छा और वो बाकी ऊपर के हॉस्पिटल, आप एक एजुकेटेड ट्रेनर के साथ जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करे, जो आपके मसल को स्ट्रॉन्ग रखे, जो आपके बोन को पकड़ के रखेगा. स्ट्रेंथ, हैविंग अ गुड मसल, आपको पता है इवन ये रिसर्च है कि जिनको कैंसर होता है, यू नो, मसल्स कैन रियली प्रोटेक्ट यू फॉर द बिग टाइम, दे कीप होल्डिंग यू अप. देर आर रिसर्चर्स. आप आज के टाइम में इतने डॉक्टर्स हैं जो ओपनली पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको सुनना चाहिए. मसल्स आर सो इम्पोर्टेंट. आपकी आप वो छोड़िए, आपके घर पे फीमेल है, आपकी मम्मी है, वो दिन रात काम करती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको एक ट्रेनर लगवाओ कि अपनी वो मसल स्ट्रेंथन अप करें. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि औरतों में जब उनके हार्मोनल इश्यूज की वजह से या कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, आर्थराइटिस का इशू होता है, एंड XYZ हार्मोन की वजह से बाकी इश्यूज होते हैं. एक सिंपल 30 से 40 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 से 5 दिन कैन मेक सच ए ह्यूज डिफरेंस. उनकी हेल्थ, वो हेल्दी रहेंगी, वो आपका भी ध्यान रखेंगी, आपके बाकी लोगों का भी ध्यान रखेंगे, आप भी खुश रहोगे. You won't feel any burden and you will be more than happy. That's an investment. Absolutely.
आज Totally agree with you. पहली चीज, मैंने अपनी इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं कराई है, बट व्हाट आई डू, मैं अपनी मम्मा की हेल्थ पे और अपनी वाइफ की हेल्थ पे और अपनी सिस्टर की हेल्थ पे आई आई गिव देम right kind of supplements, and they are into resistance training or certain kind of training which helps them to build lean muscle mass, to maintain their fat, to be more energetic, metabolism तेज रहे, and there are so many things. आप कितने benefit के बारे में बात करोगे? मैं तो आपको 2-3 गिना रहा हूँ, मैं 1000 बेनिफिट गिनवा सकता हूँ कि आप जब जाके ट्रेनिंग करते हो आपको नहीं पता हाउ गुड इट इज. फॉर्मेट कैसा है ना, सभी को पता है कि फिट रहना है, हेल्थ इज वेल्थ. अगर आपका तबीयत ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स. बट लोगों को एक फियर भी है, डर भी है जिम जाने में, क्योंकि आप जिम जाओगे वर्कआउट करने के लिए, लोग आपको अलग अलग चीज़ें से इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड फॉर्मेट कैसे, एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. सभी के हाथ में एक चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन. हम सब स्क्रॉल करते रहते दिन भर. यू सी लॉट पीपल ट्रेडमिल पे दौड़ रहे, हार्ट अटैक हो गया. पिछली बार एक सरदार जी कहा तो जुम्बा कर रहे थे स्टूडियो में, he collapsed, he had a heart attack. So people get scared of seeing instances on their phone of people working out and dying. So we need to create that it is because of gym they are getting better. These instances are bound to happen because of the lifestyle that they had. अभी पीछे एक न्यूज़ थी, एक 27 साल का मारवाड़ी लड़का, नॉर्मल जो घर का खाना खाता है, नो सिगरेट, नो स्मोक, goes for work, very nice fellow, he got a heart attack and he just died. अभी पीछे एक इन्फ्लुएंसर है, न्यूली मैरिड, he died of with a heart attack. You know, young fellow, just 28 years old, not into anything and all that. जिम तो जाते ही नहीं थे और वो भी नहीं जाते थे, दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ. आप कितने इंसिडेंट देखो, एक अभी पीछे एक कितने 8th या 9th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आया है. सो आप किस डिलेमा में रह रहे हो कि आपको किसने आपको बोल दिया कि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है और आप कंटिन्यूसली पुश करते जा रहे हो और आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आपको किसी ने रेकमेंड कर रहा है, आपकी नींद है सिर्फ 3 घंटा और आप जिम में जा रहे हो, हेवी वेट उठा रहे हो, आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं है, आपकी बॉडी थकी हुई है, आप फिर भी पुश करते जा रहे हो. एंड there can be anything. Gym doesn't take your life. Gym helps you. Gym करोगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करोगे, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा, आपकी हार्ट की लाइफ बेटर होगी. Absolutely. एक रेस्टिंग हार्ट रेट नाम की चीज़ होती है, प्लीज़ जो भी सुन रहे हो वो रिसर्च कर सकता है. और जब आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हो और आप कंडीशन करते हो अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू आर ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग ऑन योर हेल्थ हार्ट कंडीशन, राइट. सो जितना आप हार्ट को कंडीशन बेटर आप उस पर काम करते रहोगे अपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी पे, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा. जितना रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो रहा है उतना मतलब है कम बीट, मतलब दिल उतनी बार कम धड़कता है और उतने कम टाइम में आपको उतना ही एफिशिएंट आउटपुट दे रहा है. करेक्ट. सो ये सब बोलने वाली बातें होती है. इट इज़ जस्ट लोगों को एक मौका चाहिए बोलने का. करेक्ट. अभी लोगों को किसी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं पता, पीछे खड़े होकर बोलते. अभी उनकी क्या गलती है जो घर पे बेचारा जो कुछ नहीं काम से 27 साल का बच्चा गया, या एक इन्फ्लुएंसर 28 साल का उसकी डेथ हुई, या 8 साल के 8th क्लास के बच्चे की डेथ हो गई. आर दे गोइंग टू द जिम? नो. सो इट इज एंटायरली योर लेजी माइंड, आपका लेजी दिमाग है और आप बस एक फॉर लेजी दिमाग है. सेकंड ऑफ ऑल you end up following what you're seeing on your screen. Yeah. Because what messages come to you, you believe and you listen to whatever you see. Yeah. And where are you putting your own brain? Are you doing your own research? You just listen and that's about it. मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, आज के टाइम में सब समझदार है. आज के टाइम में किसी से भी बात कर लो वो ऐसे बिहेव करेगा, मुझे सब आता है, राइट. अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अपना रिसर्च भी तो करो ना ब्रो. आप दूसरों के बात में, अगर उसने बोल दिया वो बेवकूफ़ है तो आप बोलोगे वो बेवकूफ़ है. वेयर इज योर माइंड? अगर एक एक्स बंदे ने जिसने जिम 2 दिन करा है और उसने कहा आप ये चीज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप करना शुरू कर दोगे, तो आप बेवकूफ़, आप अपने रिसर्च कर रहे हो. आप रिसर्च भी प्रॉपर रिसर्च वाली जगह से कर रहे हो. आर यू टॉकिंग टू द एक्सपर्ट? आर यू गोइंग टू द एक्सपर्ट? आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाओगे वो ये बोलेगा जिम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 to 5 days इज़ वेरी गुड, along with cardiovascular activity of 20 minutes every day or at least minimum of 4 times in a week to keep you healthy. Right. So right message should go to people of how serious they need to take their lives. Main yeah. आप
I know people जो 60-65 के and they work out and they are young by behavior. उनकी energies अलग है, वो workout continuous 20-20 साल से कर रहे हैं and whenever you ask them they said we can't leave workout. There are people like that. But आपको ये जो अब जैसे एक ट्रेंड, आपको एक ट्रेंड की बात बताता हूँ, ये सब ट्रेंड है. अभी आएगा ओ एनाबॉलिक की वजह से तो ये सारी न्यूज़ में फैल फैल जाएगा. जाती है. फिर ये चीज़ लेने से वो हो गया, वो फैल गई. वैक्सीनेशन से ये चीज़ें होने लग गई, वो पूरा फैल गया. तो ट्रेंड की तरह बातें होती हैं. करेक्ट. बट फिर आप में और गधे में क्या फ़र्क है? अगर इफ़ यू You नॉट don't do your इवन own पुटिंग research. योर माइंड और यू नॉट पुटिंग इन योर रिसर्च, It doesn't make sense. इट डजंट मेक सेंस. Okay. Now let's move to a very हल्का question. या आप 15 साल के ऊपर से इंडस्ट्री में है, राइट? 18 साल? me training myself is 24, but in industry 18 years. 18 years. 18 and a half. Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you'd like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropique. Andropique is India's #1 all-natural testosterone booster. So this is what exactly Andropique is. So it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropique. So make sure you just take in one capsule of Andropique at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. ठीक है. तो आपके ख्याल से, अकॉर्डिंग टू यू, who are the top 5 bodybuilders in India who you think, हाँ यार ये तो best, these are top 5 bodybuilders in the country. I want the names. Top 5. For me, without being partial, there are a lot of guys, but I don't know about top 5, but I can tell you 2-3 which I think so are capable enough. Okay. No. So if I talk on bodybuilders, can I just say, okay, can you remove some You're talking about open bodybuilding or classic? overall? I think for me, Sunit Jadhav is Okay. still number 1. Okay. You know, then bodybuilding में आप present में आप पूछ रहे हो, right? हाँ जी. Who's playing the best of their game right now? So let's make it easy for you. Bodybuilding and classic physics together. So Sagar is again very good. Sagar Mali. Sagar Karture. Okay. Mali is good definitely, but I feel I'm talking about Karture at the moment. Okay. So Sagar Mali is definitely good, no doubt about it. So do you give me Sunit Jadhav number 1? I will, yeah, Sunit number 1, Sagar Karture number 2. Sagar Karture number 2. Yeah. Any 3 more names? I think I was also very good. Though because of my injury, I don't play bodybuilding now. I play men's physique. I think I'll stick with first two only. Sunit Jadhav and Sagar Karture. Okay. Because these two people are there. I've seen them growing and doing really nice. Okay. You know, and back to back, they're in a good shape. Sunit, though I haven't heard, he's not. I don't know if he's playing right now or not. But Sagar Karture, the way after the surgery, his comeback again, the conditioning and all that, I loved his work. Okay. Sagar Mali is also good. I'm not saying that he's good, but we need to see him on the stage winning something now. Right. So I'm talking about the people, those who are excelling and growing again and again. Okay. So let's make it a little easy for you. Give me 3. You give me 3-4 names and I'll choose one to that 3. I'll come later on. So I'll tell you what. You've played classic. You've played men's physique, right? I played classic also for 3 years. Then now I've shifted to men's physique because of my tail injury. Okay. So let's make it easy for you. Yeah. I'll play on your side for now. Yeah. Okay. So can you name me 5 athletes of men's physique? Let me complete my question. Yeah. Name me 5 athletes of men's physique who you think are good but can do really better in that category. See, Amit, Okay. one for sure, Okay. who is already, Amit Agre, right? yeah, 100%. Rahul,
Okay, Rahul Fitness. Yeah, Rahul Okay. Fitness. I don't know him personally, but the way he's improving. Yeah, you he know, recently competed in Hong Kong, bro, yeah, and he got did fourth. really well. Yeah, he was looking really awesome, and hats off. Yeah. And I'm Third? sure Amit is also going to kill it on the stage. Absolutely. Third, again, see, first two are okay. Then the No, I need three names more in this. Come on. I've given you your category that you compete in. So I'm making it easy for you. I think Vardhan is Vardhan really. Malhotra. I look forward to Vardhan. Vardhan has got something very beautiful, and he's working with his coach right now. And Vardhan has got a lot of potential if he's being, if he follows everything and he's on a Right. track. Right. And then there are again, a lot of people, but Two more names I'm waiting for, bro. Two more names. see, honestly, I'm very good for men's physique, so I'll give one of mine. No. Except you. Except me. you. Except you. Except yourself. I think in the past or in the present you're talking In the about? present. In the present. Past then- bhi chalega, chalo. What my question was, give me names of 5 men's physique athletes who are good but can do better. So there is this Pankaj guy from Kanpur Okay. who's trained by Shredded Rajesh. Okay, I'm not quite very well aware of Pankaj it. is Pankaj Jagwani or something. Okay. He's- Acha, Pankaj Gajwani. he I know him very well. has- Sorry, I know him very He well. has amazing potential. Yes. I have just talked to him once. I don't know him No, personally. I know him personally very well. He's a but very good athlete. he has amazing potential to take the India name ahead. So, he's an IVB pro as well. Yeah. One yeah. more name Now remaining, he's buddy. okay. The last one. No looking at no clues. One more name. Honestly, now I men's physique. Who else I think so is good? Lovepreet. Yeah. How can I miss him? Yeah. Sorry. So I think Amit and Vardhan are trained by Shredded Krishna. Lovepreet is being trained by Harry Sandhu. Harry Sandhu. Krishna, amazing coach. Harry Sandhu, amazing coach. Rahul is being trained by that fellow in Delhi. What's his name? I don't remember his remember coach name, but I'm sure he's also very good because I've seen a student working really hard. And is it done? Like 4 or 5? 5 names done. Okay, now we're done talking on athletes. Yeah. Okay, now, so you are an athlete and you also are a pro coach. Yeah. You gave me names of some athletes of men's physique, Yeah. and you also gave me coaches. Yeah. So who you think are the top 5 pro coaches in the country when it comes to athletes who we see competing on stage on international stages like what we have in India, Shero Classic, and we have the Amateur Olympia? Who do you think is top 5 coaches according to you, prep coaches? See, the first thing is I will. Okay, in this genuinely, Yeah. I think I'll include my name and I'll give you 4 names. Okay, sounds good. Chalo. First is Murtuza. Okay. I think he's absolutely amazing, absolutely fantastic, amazing coach to work with, good work ethics. He's there for you. He knows his job. He knows the blood work. He knows what to take, what not to take. Okay. Big fan of him. Okay. I have never worked with Gurudesh Man, but somehow, I've seen his athletes and all, and the way they are progressing and all, I think Gurudesh is amazingly good. Okay. Though I honestly have never interacted, just once or twice he wished me on my birthday because we share the same birthday, me Oh, and is it? Gurudesh, 5th August, yeah. Oh, superb. Very humble, but I know he's knowledgeable because I've heard him out. He talks simple, he talks sense, and he knows his shit. 2 more names remaining. Third, of course, I won't forget Rajat. Rajat Goyal. Rajat Goyal is very well experienced and educated guy. If one is really eager and like he wants to punch it, athlete, because he's an athlete and he's playing along. His mentality, his mental setup is very strong. No, with Rajat, I'll just share one thing. When I see someone who's an athlete, Yeah. they'll focus on being an athlete. Someone who's a coach will focus on being a coach.
Rajat is that one kind of an athlete and also a coach who, when he's on stage, if he's competing, he's the best on stage. He competes to be the best on stage, and he would also make sure any of his athletes are competing. They also get in the best package. So hats off to Rajat. He's an amazing coach and a very good athlete as well. So I got to give one One more. more, one more. Okay. So as I said, Murtuza first choice, Gurdesh, Rajat. No, again. Okay. I'm taking time because I want to be honest what I feel. Absolutely. All right. Um, Harry Sandhu Harry Sandhu. is again very educated. I didn't get chance to work with him for a long term. I worked with him for a very short span, but he knows his thing. So I will always consider his name. And if I have to count it four, then Harry will be Number yeah, 4. Yeah, Okay. and I'll consider myself as number 5 because I'm into the line from 18 years. I've been into it from 9 years. I've worked with around 5-6 coaches. I've upgraded my knowledge. I've studied very hard for it, and I know where I stand. So it's my confidence and my experience that I can say that I'm very good with my work. Superb. Yeah. We definitely, I'm sure, Yeah. we're going to see you on stage next year, Yeah. and we're hoping you all the very best. Thank you so much. So let's do one thing. Yeah. There's one thing about my podcast that we have, which is called the Rapid Fire. Have you heard of it? Yep. So not with you, but with Karan Johari. superb. So that is with Karan. Okay. This is Andropique mic testing with Gavin Phillips. So this is what happens. When I asked you questions, you took time to think. Yeah. Here you can't think. The first thing in your mind, you need to spit it out. No taking time to think at all. Sure. Be as fast as possible. Sure. Okay. Brace yourself for the rapid fire right here at the Andropique mic testing. Okay. If you get a chance to swipe your life with someone, a bodybuilder, who would you swipe your life with? Sibam. Okay. One thing you'd like to undo in your life? My childhood experiences. Okay. Okay. One thing in life you would feel like redoing Redoing. Living again every day. every day. Superb. Every good product in the market that is there has a tagline to it. Yeah. Okay. If you have a tagline, what would the tagline be? Preach what you practice, practice what you preach. Superb. Very few people actually do that, but yeah. Okay. You've been in the industry for a very long time and you might have gotten a lot of compliments. What is the best compliment you've ever got? That my body language is still very humble, even with so much of experience, and it's a very big thing, because people ego with their knowledge or experience becomes very, their language change or their intonation changes. They become louder. Or they try to show. I don't like all that. Okay. If you grow, if you have seen a tree growing, right? Initially it grows straight, but when it is grown up, the leaves are all going down. So the more you are experienced, the more you're humble about it. You don't need to flaunt it. Correct. Yeah. So I totally agree with you. You might have heard rumors in the industry about people talking about you. What is the most funniest rumor you've ever heard? Funny. A lot of people love me, and I'm sure a lot of people must be hating me because everybody is different. They have their own opinion, and a lot of people get inspired by me. Mostly it's inspired. They get inspired by me. What is the bad humor? What is funniest humor? Funniest. Okay. Shit. ये कौन है? ठीक है. ये कौन है? He got it. Okay. This is going to be a little difficult. Could be. One secret of the fitness industry that you want to reveal. Consistency. That's the secret. There is no other secret. If you are consistent, you will grow as a trainer, as a coach, as an athlete. If you are not consistent, you won't grow
full stop. Khatam, end of story. One End word: of story. consistency. Consistency. Consistency is the key. That's the secret. Super. Okay. One myth of the fitness industry you want to burst. One myth of the Fitness industry you want to burst. that जिम जाने से लड़कियां आदमी जैसे लगने लग जाती हैं. And that's very funny, you know. You cannot look manly if you go to the gym. Totally. It's so stupid. Why do people say it? Why is this? It's not just said. It's said for many years. People still say it. Yeah. If a woman wants to go or a girl wants to go to the gym, they'll say, "अरे तुम gym जाओगे तो मर्द बनेगा." Because man don't आदमियों को ये समझ नहीं आता कि औरतों को भी मसल मास इम्पोर्टेंट होता है. अब साइंस आ गई है, इतने बेनिफिट है, आपको पता चल रहा है. And I'm sure all the coaches are educating people now. There are good coaches. I have already given you the names. It's high time. ये जो हिपोक्रेसी है ना कि औरतों को जिम नहीं जाना है या तुम्हें इतनी मसल की क्या ज़रूरत है. मैम आप किटी पार्टी करो, मैम आप शराब पियो, बट जो करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए उनको करने दो ना. लेट देम डू इट फॉर देयर हेल्थ. Correct. आप किटी पार्टी में बैठ के 4 लोग की गॉसिप करोगे, हंसोगे, खीखी शराब पी के आओगे, सो जाओगे, आप रहोगे वैसे, आप कभी नहीं बदलोगे. बट एक जो बंदी या औरत या किसी की मम्मी या सिस्टर जो अपने हेल्थ के लिए, पहली बात है आपको नहीं पता उनकी हेल्थ का इशू है कि नहीं. दूसरी बात, यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो जिम जाने से हाउ मच हीलिंग शी इज गेटिंग spiritually and Correct. mentally. You know, you don't understand. Gym is the most addictive thing anybody can do. Agree. The biggest anti depressant, you know. आप कोई दवाई मत लो, आपको लग रहा है आप लो फेज में हो, start going to the gym, start working out, start channelizing your energy and I can write you down. आपके घर पे कोई भी औरत है जो आपको लगता है ठीक नहीं है, उदास है, प्लीज़ आप उनको जिम भेजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी में डालिए. आप देखिए वो खुश होंगे थोड़े टाइम के बाद. धीरे धीरे दे विल कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग. आई विश कि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ बहुत लोगों को तक पहुँचे. प्लीज़ अपने मॉम का ध्यान रखिए, उनकी एज हो रही है जिन्होंने आपको बड़ा करा है. आप अपनी सिस्टर का ध्यान रखिए, आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए जो आपके लिए सब कुछ करती है. आप अपने बेटी का ध्यान रखिए जो कल को बड़ी होगी. मेक अ स्ट्रॉन्ग physically. When physically you're strong, mentally you become 10 times stronger. Absolutely. You know, आपको बेनिफिट नहीं पता, प्लीज़. जैसे आप पूरा दिन यूट्यूब पे बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे, इसके लिए रिसर्च करिए कि औरतों का जिम जाना क्यों ज़रूरी होता है और कितना ज़रूरी है. Absolutely. Agree. You know, I wish लोग इस चीज़ को सुने और अपने घर पे हर फीमेल को मोटिवेट करें. Absolutely. So, any last question? Any message for all prep coaches in the country? Any message for them? I think all of them are amazing. I respect everybody from Murtuza to Harry Sandhu to Gurdesh Maan, Rajat Goyal, Shredded Rajesh, Shredded Krishna, Siddhant Jaiswal, and Iqbal. Iqbal is also really good. Iqbal Sayed. I didn't remember his name, but Iqbal is really good. He's one of the finest upcoming. I think he's already good. He's fabulous. He's fabulous. I know Iqbal is thoroughly intelligent and smart guy. And I just wish them all the best, you know, like I just wish everybody do good. And I hope आपको ऐसे स्टूडेंट मिले जो हार्ड वर्किंग हो और आपकी रिस्पेक्ट उतनी करे, एंड they don't hide you from the people when you are educating them. Right. आज मैं किसी से भी कुछ सीखता हूँ, मैं टैग करता रहता हूँ. You know, I have no shame in tagging because how will it make me small even if I have 18 years of experience. मैंने हर प्रेप चेंज करा है, प्रेप कोच चेंज करा है और हर प्रेप कोच को प्रमोट करा है. मैंने फ्लेक्स को भी प्रमोट करा था जब मैं फ्लेक्स फीलर के साथ था. अहमद अलीकी को मैंने 2 साल था, जेमी को भी करा, मुर्तुज़ा को भी है, you know, and जो भी जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सबको करा है. You know, and it's always when someone helps you out and by you giving them credit. Now since social media का ज़माना है, it's always good to appreciate someone who's helped you. लोगों को क्या लगता है कि आप अगर किसी को अपनी प्रोफाइल में प्रमोट कर दोगे तो लोग उनके पास चले जाएंगे. ब्रो, आपका जितना लिखा है आप हार्ड वर्क करते रहो,
आपके पास आएगा. Absolutely. You be your best. But at least as a teacher or as a prep coach आप उनकी इज्जत करो. They deserve to be recognized. Right. They work so hard for you. And I hope ये हर prep coach सुनेगा तो उनको समझ आएगा क्योंकि I'm a prep coach. कई बार ऐसे मुझे students मिलते हैं, they don't put my name. As I said, I've trained one of the best people, but nobody. I know नाम लेना नहीं, but I want to ask. वो Do you नहीं. want to take names? Do you want just No, tell I us so don't. exactly? I don't. Because you know what, But- it is your hard work that you've put in, and it is appreciation that you don't need, that you deserve. If like I'll tell you one thing, when I'm hosting the Olympia amateurs, entire credit goes to Mr. Manish Gandhi. I say big thank you to Mr. I Manish agree. Gandhi for giving me an opportunity to host the biggest stage in Asia when it comes to the field of bodybuilding. Absolutely. I appreciate him Absolutely. because getting a platform like this. So when people love to be appreciated, not that they're waiting for it, but they like to be appreciated. Can I tell you a small thing? Manish is actually a very nice man. Totally agree with you. If you have a fire in you, he will help you. That is it. But a person has to see fire. He will guide you. See, बहुत टॉपिक है जो बहुत सब्जेक्टिव है. कभी कोई स्पॉन्सरशिप को लेके बोल रहा है, कोई उसको लेके बोल रहा है. मनीष कब से लोगों को समझा रहा है अपने इंस्टाग्राम पे काम करो. कब से लोगों को समझा रहा है अपने इंस्टाग्राम पे काम करो. बिकॉज आज कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी, Your Instagram must be strong. It has to be give and take. आप उसको कितना रिटर्न में आप उसकी सेल्स बढ़ा रहे हो तब करेगा ना. कोई आपको बस बिकॉज इफ यू गॉट अ प्रो कार्ड और यू आर अ प्रो कोच नहीं कुछ मिलता. नहीं होता, कुछ नहीं होता. सो आप उसका भी सुनो, वो क्या बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रहा सही है. है. और अगर आप अच्छे हो, आपको कौन रोक सकता है आगे जाने से. कोई चाहे आप ओलंपिया स्टेज हो, इफ यू आर गुड एंड यू केपेबल, आप आज हारे हो ना, कल नहीं हारोगे. डोंट गिव अप, कंसिस्टेंट रहो ना. आप में वो आग है ना स्टेज वाली, तो आप वो बस वो मेंटेन रखो, आप पहुंचोगे. खत्म. कौन आपको रोक सकता है. एक बार रोक लेगा, दो बारी, तीसरी बार कोई नहीं रोकेगा. Agree. Totally. सो जस्ट डू इट. मनीष इज अमेजिंग. मैं उसके बारे में बोलना चाहता था. और I think people should know that if you have fire, he will help you. Because I have seen that. अब मैं प्रो कार्ड नहीं जीता हूँ तो लोग ये नहीं बोल सकते अरे मनीष ने कुछ ये वो देखो मेरे को नहीं दिया. आई एम नॉट अ प्रो कार्ड बट आई एम स्टिल अप्रिशिएटिंग हिम. बिकॉज पीपल नहीं पता होता, अजम्पशंस बनाते हैं. किसी ने नेगेटिव बोल दिया, 4 लोग बोलना शुरू करते, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे. No. आप कभी उससे मिले हो, कभी उसके साथ बैठे हो. He is a humble sweetheart. He is very humble. And Yeah. the best part, I always keep telling in my podcast, very often I keep saying that, athletes used to, if they want to, compete on the biggest stage of them all, which is Olympia, they always have to travel overseas to compete. Yeah. Mr. Manish Gandhi and Mr. Sheru Angrish have got that platform here in India. We need to appreciate the promoters for getting that stage. We need to appreciate and love that stage because it's become so easy for us athletes to compete on a stage, and if you win, you head out. For Amit Agre, apparently, he came in on a Sunday, not knowing, he came to give his best. He Yeah. won the gold, he won the pro card, he won the pro show, all in one day. Yeah, I agree. So that's how magic happens, and it all happened on your soil. Yeah. What more can you ask for? Yeah, I agree. And I can't agree enough. कहते हैं ना कि शुक्रिया किसी का करना बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में. नुक्स निकालने में 1 सेकंड लगता है. सही है. अब मैं भी तो खेल रहा हूँ ना 2017 से. एंड पीपल हैव सीन मी इन द बेस्ट कंडीशन. मतलब बड़े से बड़े कोचेस ने मुझे बोला था यू आर लुकिंग वेरी गुड एंड आई होप यू विन. बट नहीं, वो स्टेज पे जाके नहीं गिरा. मैं ये बोलता रहूँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है, या मैं मनीष के ऊपर कि मैं 7 साल से खेल रहा हूँ, तू मुझे ज़बरदस्ती नहीं दे रहा. ना कुछ लॉजिक, ना कुछ, बस ब्लेम डालना बिकॉज आई एम नॉट विनिंग. ये चीज़ मैं अपने को बोलूँगा मे बी आई नीड टू बी मोर बेटर, और मे बी टेक्निकली ऑन द लास्ट डे आई एम नॉट दैट गुड इनफ वेयर आई कैन शो माई 100%. मैं नहीं हो पा रहा एंड इट्स ओके. I am happy I can stand on the stage. No, you need, if you're able to go enter any stage, you Yeah. have to also be able to appreciate or to take in defeat. You always can't say you are the best. There are people who are 100%. better than you standing next to you. 100. I could have given up long back. I was always in a first call out or a second call out. Usually second call out से first call out में होता था मेरा. 2-3 साल तक back to back हुआ. मैं classic में मेरा first call out में होता था. I was always in a first call out. But कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो lack होगा ना. Absolutely. अब कंडीशनिंग मेरी जितनी भी अच्छी, क्या पता मेरी पोजिंग लैक करती हो, क्या पता उस दिन मेरे से बेटर लड़के मेरे बगल में. Correct.
I'm sure I'm the best, but better लड़के हैं, तो मैं Totally. क्यों blame करूँ? और ठीक है, you know, as I said, it's a subjective game. आप मेहनत करो, आपको नशा है ना, आप खड़े होना करो, चाहते हो, सिर्फ करते रहो, करो. करते रहो. और नशा नहीं है तो मतलब आप फिर टाइम पास करो. आपको सिर्फ एक ट्रॉफी से मतलब है, आपको एक मेडल मेडल ही से मोटिवेट मतलब है, करेगा. और कुछ नहीं चाहिए. If you're a bodybuilder, it's a lifestyle, bro. It is in you. You can't stop it. You can't take You it can't out. stop it. आप जीतो ना जीतो, मैं 50 साल में भी जिमिंग करूंगा, मैं 50 साल में भी ऐसा लगना चाहता हूँ. I'm already 38. I still want to look fit like this. Absolutely. You will stop it. It's a lifestyle. You will continue it. Maybe आगे 3-4 साल के बाद मैं स्टेज पे ना खड़ा हूँ, but मैं बॉडी बिल्डिंग जरूर करूंगा because I am addicted. Absolutely. Yeah. You know, in this podcast, I got to get to know a lot of things about. Sorry. In this podcast, a lot of things came out. One thing is being consistent. Yeah. Second is help the women in your house to get fit. Yeah, of course. If they're physically fit, they'll be mentally fit. Yeah. And if they're mentally fit, your house is a beautiful place to live, and you don't have any place that you can, get a reason for someone being sick or not being well. So a very good message has come out in the podcast. Thank you very much for being a part of the podcast. Thank you. Yeah. But we have a parampara on the podcast. Now that you're in my Pune studio, I've got this mug which is specifies as the Andropique mic testing mug with Gavin Phillips. I want to hand over this mug to you, and there's a pen inside. Yeah. I would like you to write a message and give in your autograph on the mug, and we'll have it here on the wall of mugs. It's a memory that we will have for all our guests that we have had on the Andropique mic testing. So it says keep shining. Thank you. I think whatever you're doing, keep up the good work. And, Thank you. Thank you very much. I hope the way I've got inspired by the other people, those who have come to the podcast, I hope I can inspire at least few. I just wanted to be real. The whole point was to be real and not to talk anything behind the curtains. Right. And I hope this gives a very strong positive impact to the fitness community that please don't fight, don't put anybody down. Hi, we're a small industry. You Let's live work together hard, happily. you grow your knowledge. Please, stop putting people down, stop fighting, Keep working, stay focused. Make money for your family, for yourself, travel with them, enjoy your holidays. Right. Put money on the education for you, for your kids, for your family. That is how you should think. Jealousy won't take you anywhere. Won't take you anywhere. Yeah, and यही बोलूँगा कि if you want to be the highest paid trainer, please study. Please Study. Educate yourself. Educate Keep educating yourself. yourself. Keep educating yourself. Yeah, theoretically, practically, both. Yeah. Super. Thank you very, very much. Thank you. And for you removing time to come all the way from Mumbai to our Pune studio, I'm saying it again because it's an honor to have you here. A small token of appreciation from you, the Gavin. entire team of Andropique Mic Testing. Thank you. Thank you very That's much. So lovely, That's so cute. Thank you for being here. Thank Means you. a lot. Thank you Yeah, very thank much. you so much. And we'll see you very, very soon. Definitely. You promised me a Mumbai darshan, so even though I've been in Mumbai for a 100%. very short time, I'm going to still come with my family for Mumbai darshan. 100%. 100%. Thank you so very I'll much. see you there. Thank